तो এই जो स्लाइड টা আগে লিখিয়া কইলে এইটু আমি সেটা করি সেটা তাকে লেখা হবো ওকে এটা নেবে ওকে annotate କରିକି ଏଇଠି ଲେଖିବେ করে ଯାହାବି the color eraser और काटला बेलू ता क्रॉस मारी करी क्रॉस मारी और चार्ट रखेंगे इग्नोर कर दीजिए तो good morning dear students am I audible? Good morning, dear students. Welcome to DHS sponsored online academic support program. I am Devasis sir, and today we are going to discuss the very beginning, the very first chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. So first of all, let me know in the chat box, so you can unmute yourself and tell me, am I audible? I shall unmute for very okay. Yes. Okay. Okay, done. So in this segment, in this part, we are going to discuss the post-fertilization changes in today's class. As you can see over here, the students, as you can see over here, the topic is about sexual reproduction in flowering plants. Yes or no? We all know when it's a flowering plants, the meaning is called as the angiosperms. Yes or no? Plant or flowering plant is also called as angiosperm. This plant has been divided into different parts: Salophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Spermatophyta. Inside that Spermatophyta, there are two things. One is gymnosperm, and then second is the angiosperm. जो angiosperm ଅଛି ପିଲାମାନେ, that angiosperm is the also called as a flowering plant. It is the advanced level of plant. और एठी हमें sexual reproduction देखिए. Done. So ये जो entire segment को, entire chapter को, we can divide into three parts. Yes or no? We can divide the entire segment into three parts. One is called as the pre-fertilization stages. Second is the fertilization, and the last one is the post-fertilization stages. And in the previous classes, you have already learned about that pre-fertilization stages, the structure of a flower, the different types of process of formation of gametes. That in case of male, development of male gametophyte. In case of female, development of female gametophyte. You also learned about the transfer of pollen grain from one flower to another flower, from stigma to from anther to stigma. You already learned all these things. Then there are advantage, disadvantage, and in the last you have discussed about that double fertilization process, which is a characteristic feature of angiospermic plant, that is double fertilization and triple fusion. So basically, तुम मैंने एक जाए की पढ़ी सकते. तो आज मोर काम होची today I discuss from the last part double fertilization. से हम start करेंगे. हम आज पढ़ीबा आज दीटा क्लास रे हम आज कौन पढ़ीबा ना today we are going to discuss the most important topic. से टॉपिक का नाम होची कौन post fertilization changes. और से post fertilization changes से कहा बता आसीबो ना सेठी आसो केमती एंडोस्पर्म डेवलप होची केमती एम्ब्रियो डेवलपमेंट होची केते प्रकार एंडोस्पर्म थाए बुझछनो ଆଉ ସେ embryo develop ହେଲା ପରେ ପୁଣି monocot embryo କଣ dicot embryo କଣ and today in this class we'll also discuss about some topics some questions जो क्वेश्चन तुमको आगको एंट्रेंस रे हेल्प करिवो ता सहित काउंसिल रो जो एमसीक्यू क्वेश्चन पड़छि ता देरे भी हेल्प करिवो and before starting this class let me tell you just a little information कि in this year NEET today is May 21st today is May 21st जो 4th May रे जो NEET entrance exam हेतिला all over India जो entrance conduct कराइथिला from this chapter, that is sexual reproduction in flowering plant, 6 questions are being asked. So ना 6टा क्वेश्चन एटू पचरा जाईची ए चैप्टर रो तो जब तुम ए चैप्टर को भलसे प्रिफर करके जाउछो भलसे पढ़ी के जाउछो देन यू विल गेट 24 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली बुझछनो ए 6टा क्वेश्चन जो पढ़ितला बहुत इजी क्वेश्चन थिला तीनटा क्वेश्चन थिला डायरेक्ट क्वेश्चन तीनटा थिला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन टिके पिला कंफ्यूज होंती कि स्टेटमेंट डीटा देइची assertion रीजन देइची बोथ आर करेक्ट कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना नहीं ए सब जिनिस सेते सब रहइबो और सेही क्वेश्चन को ठीक करिया को हेले तुमको तो बेसिक्स को क्लियर करिया पड़ो until and unless you are not clearing your basics it's not going to help you in that segment. Done? Okay. Okay, good morning to all of you and
Hereby I am going to start this class. Then that is sexual reproduction in flowering plants. Now, मुझे स्क्रीन टाको ब्लैंक एथिपाई छाड़ी पिला माने कि हमें ये ब्लैंक सेगमेंट रे कौन करियो जिबा ना जानिबा ए चैप्टर रे कौन पार्ट सब थिला बोली. Just let me know कि एटा विजिबल होची ना होनी. मु येलो कलर तो देखा जिवनी. ब्लैक कलर ड्रॉ करची. Is it visible? Good morning, everyone. How good morning? Okay, done. Mona Lisa is saying it's visible. Okay, now is your sexual reproduction in flowering plant thila. Then a part रे a chapter को हमें divide कर दीजिए into four segment. as a four segment three segment. The three segment कौन थिला? What थिला pre-fertilization. Once I discuss the previous part, then I'll quickly move into our today's segment. ठीक है जी. Pre-fertilization changes कौन सब है जी? Then second one is the fertilization. जोटा कि in case of angiospermic plant, that is double fertilization and triple fusion with ଆମେ କହୁଛେ. And last one जोटा कि आजिर class रो main part होची main motto होची post fertilization changes. Yes or no? So in this today's class, we'll discuss from here only post fertilization changes. But once a great teacher had told me, the students, to understand any topic, you need to understand a little bit level of complexity just below that topic, so that it will be easy for both of us, me as a presenter and you as an audience. हमको जन गोटा help करिवो कि मते एई part को बुझिबा को हेले भले से I need to understand this two part very clearly. And I hope तुम दिटा जिनस बहुत भल से बुझी सारिଛ. Just to summarize it, तो मुझे टिके गोटे clear idea दवा पाई कि मैं कहि दोछि कि in the pre-fertilization changes तुमे कौन पढ़िथिलो. You have learned about structure of flower. तुम गोटे flower ର structure देखिथिलो. गोटे bisexual flower टे देखिथिलो. गोटे bisexual flower देखिथिलो. तापर सातटा पार्ट थिला calyx, corolla, androecium and gynoecium. ये calyx, corolla, androecium, gynoecium केमते थांदे केमते arrange थांदे. I'm not going into the details. I'm just saying कि तुमे चारटा पार्ट पढ़िथिलो. Then ସେଇ ଯୋଉ plant ର ଗୋଟେ bisexual flower ର ଦିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା କି reproductive spider help କରନ୍ତି, that is the androecium and the gynoecium. They are the two floral holes that ତାକୁ help କରୁଛନ୍ତି reproduction. ତ ଯୋଉ androecium ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ଥିଲା ଅବିକା group of stamens. The group of stamen ଭିତରେ କିଏ ଆସିଲା? Group of stamen ଭିତରେ if you look into a single stamen, you will find an anther and a filament. That anther जो थिला, it was a bilobe dicecal structure and the filament थिला a long slender elongated structure टे थिला. ये जो आंथर पिलामेने थिला से आंथर दे में टीएस सेक्शन काटी देखुतले तामे कौन पाउथिले ଗୋଟେ टेट्रास्पोरैंजिएट स्ट्रक्चर टी पाउथिले. इनसाइड द टेट्रास्पोरैंजिएट स्ट्रक्चर बुझी परछ मु जा कहूची फ्लावर रे जेटा पार्ट तुम देखिलो गोटे थिला एंड्रोइसियम गोटे थिला गाइनोइसियम. एंड्रोइसियम थिला तमरो मेल वाला पार्ट, गाइनोइसियम थिला पर फीमेल वाला पार्ट. और जो एंड्रोइसियम था तुम देखिलो कहा को बिका गोटे ग्रुप ऑफ स्टैमेन. ग्रुप ऑफ स्टैमेन तो कहा को देखिलो एंथर थिला फिलामेंट थिला. से एंथर भीतर आसिला कि अबिका चारटा माइक्रोस्पोरेंजियम. तो फोर माइक्रोस्पोरेंजियम रो चारि पटरे चारिटा लेयर प्रेजेंट थिला. यस और नो? मन रखिया पई ट्रिक. चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम रो चारि पटरे चारिटा लेयर थिला. And the name of those four layers are, one is the epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. मन रहइबो epidermis, endothelium, middle layer, tapetum से पार्ट रो सब थिला. देन तापर को हितला ना से चारटा पार्ट हम देखला परे एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम हम भीतर को एंट्री करथिले कहारो इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. से माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर सेंटर रे थिला सेंट्रल सेल ताको हम कहथिले स्पोरोजिनियस सेल. से स्पोरोजिनियस सेल कोन कला आगो जाके कन्वर्ट हे गला कहथिले पोलेन मदर सेल. पोलेन मदर सेल and then the pollen mother cell start dividing and see कोन कला अभी meiosis कला. meiosis कल चारटा हैप्लॉइड कॉमन हिची चारटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राहेड बनिची. चारटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राहेड पुनी आगो जाई कन्वर्ट हे गले चारटा पोलेन ग्रेन्स रे. और से पोलेन ग्रेन्स माने आगो जाई के पॉलिनेशन में हेल्प आसी.
Then ठीक सेम जब तुम फीमेल पार्ट बुझो तो फीमेल पार्ट तुम कौन देखिছো ना फीमेल पार्ट रे केमती गाइनोसियम भीतर के थिला गाइनोसियम भीतर तुम देखियो जदी अभी का वन बाय वन इनसाइड द गाइनोसियम के आसीबो ग्रुप ऑफ कार्पेल्स और ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स देन तुम कार्पेल भीतर देखियो कि पिस्टिल जो देखियो से पिस्टिल भीतर पिला मन कला कौन पाइबो तीनटा पार्ट पाइबो वन इज द स्टिग्मा देन स्टाइल देन ओवरी ये सुनो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा का काम कुछ कौन ना ता ऊपर पोलन ग्रैंड बना सब पड़ी रही the stigma is a landing platform which will receive the pollen grain. Style is the long, slender, hollow, tube-like structure, elongated structure, which is a connecting link between a stigma and a ovary. अगर हम ओवरी भितर ଯିବା then से ओवरी भितर पाइबी गोटे cavity and the name of the cavity is called as locule. से locule भितर गले मैं कौन पाइबी locule भितर पाइबी placenta. placenta भितर गले कौन पाइबी I'll get the ovule. ovule भितर कहाँ पाइबी nucellus. Nucellus रे कहाँ पाइबे ना nucellus रे one of the cells towards the micropyle will start dividing as it grow करके कौन है जीवो गोटे sporogenous cell है जीवो that sporogenous cell आगो जाए convert है जीवो कोथरे megaspore mother cell which is diploid in nature और से megaspore mother cell आगो जाए कि meiosis करे कि चारटा haploid megaspore tetrad formation करिबो out of those four megaspore tetrad the three megaspores present towards the micropylar end will degenerate and the one which is towards the salazar end will remain functional. And that functional megaspore agu jainki divide karibo और divide karibo केथर three time. It will so three time karyokinesis और तीन थर karyokinesis करी से कौन बने दवा अबिका one nuclear rose two nuclei, two nuclei rose four nuclei, and four nuclei rose eight nuclei. And then the eight nuclei will arrange in 3 plus 2 plus 3 arrangement salazar pade tinta then microbial pade tinta and center re dita and say to the formation hela structure amaro eight nucleated seven cell structure which is called as the embryo sac or the female gametophyte. तो এই जो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है तुम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़िथिलो देन तापरे एई चैप्टर तुम पढ़िथिलो कोन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट जाओ पोलन ग्रैंड को जाए एई चैप्टर तुम आगो पढ़िथिलो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देन एई चैप्टर तुम आउ कोन पढ़िथिलो एई पार्ट तुम आउ कोन पढ़िथिलो ना एई पार्ट तुम पढ़िथिलो कि गैमेट ट्रांसफर पिला माने ये जो एंटायर पार्ट्स हे गला ये एंटायर पार्ट्स को हमें कौन कहि पेगा ना जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दीज आर टू लॉन्ग क्वेश्चंस दीज आर टू इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग सीएचएससी एग्जामिनेशन तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें कौन कहिबा पुट टुगेदर इट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस तो एठी तमे गैमेट केमती फॉर्मेशन होची यू नो ऑल दोस थिंग्स देन से गैमेटा फॉर्मेशन हला परे कोन हबो ना गैमेटा ट्रांसफर हबो तो सेकंड पार्ट कोन आसिला गैमेट ट्रांसफर आ ये जो गैमेट ट्रांसफर रे तमे कहा विषय रे पढिचो ना गैमेट ट्रांसफर यू विल स्टडी अबाउट यू हैव स्टडीड अबाउट पॉलिनेशन केमती पॉलिनेशन हुए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर देयर व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट और से एजेंट माने केमती काम करंती ये बायोटिक एजेंट की अबायोटिक एजेंट को एजेंट पाई के फ्लावर टी केमती हेसिबो से फ्लावर कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थिबो तो फ्लावर कोन ऑफर करछि डिटेल्स तमे सब जिंस पढिचो तार एडवांटेज कोन डिसएडवांटेज कोन तार कॉन्ट्रीवेंसेस कोन each and everything you have studied in the previous classes and in this month only तुम्हें ई मे मासरे तुम्हें सब जिंस पढि सारछ पिला माने प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर गैमेटोजेनेसिस गैमेट ट्रांसफर and the very last class in the very last class previous class तमे कौन पढ़िथिले about double fertilization triple fusion तो मो काम आज कोठु स्टार्ट हबो मो काम स्टार्ट हबो एटु कोठु ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रो तो टुडे इन दिस क्लास आर भितरे हम आज कोन करबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को बुझीबा तार किछि बेसिक क्वेश्चन को आंसर दबा and then से कांसेप्ट भल से मेमोराइज करिके जिबो डन आर यू रेडी ले माने जति कहिली तुम जानि परलो आर यू रेडी एटु स्टार्ट करबा डन ओके ओके गुड तो एठो हम स्टार्ट करबा आवर नेक्स्ट
ना देखो तो एबे आसिला कहा करता है ना पोस्ट fertilization changes. But you can say post fertilization events. After fertilization, ଆଉ କଣ event ବାକି ରହିଲା after fertilization ଆଉ କଣ ଜିନିଷ changes ହେଇଛି. Changes जो word ଅଛି କି ଗୋଟେ flower ଭିତରେ କଣ ଜିନିଷ change ହେଇଛି ତାପରେ କଣ ଜିନିଷ ହେଇଛି let us know very briefly. If I draw an embryo sac ଯଦି ଗୋଟେ embryo sac draw କରିବା ତାହେଲେ এই embryo sac ର ଏଇପଟେ supulates this is the chalazal end and this is the micropyle end. এই chalazal end পଟେ କଣ ଥିଲା ତିନିଟା antipodals ଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ଏଣ୍ଡ ରେ ଦିଟା ଥିଲେ ତମର କଣ ନା ଦିଟା ଥିଲେ ସିନର୍ଜିଡ ଏଇଭଳିଆ ସିନର୍ଜିଡ ତା ଭିତରେ କିଏ ଥିଲା ଫିଲିଫର୍ମ ଆପାରେଟସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଗ ସେଲ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯେଟା କଣ ଥିଲା ଦିଟା ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ yes or no if I say it's a structure of female gametophyte ଯାହାକୁ ଆମେ embryo sac ବୋଲି କହୁଛେ which is 8 nucleated and 7 celled and the nucleus are arranging 3 plus 2 plus 3 arrangement ରେ arrange ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି କି ଇଏ ଉପର ତିନିଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ together this is called as antipodals yes or no then ଏଇ ଯୋଉ center ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା it is called as polar nuclei. This is called as your egg cell. These two are called as your synergids. Inside the synergids, what is happen? What is present? That is a finger-like projections called as filiform apparatus. Filiform apparatus and a egg cell and synergid togetherly known as egg apparatus. So this is the basic structure of an angiospermic embryo sac. Clear? ଏବେ ହବ କଣ during fertilization the pollen tube will come and reach at this end. Yes or no, you know pollen tube କେମିତି entry करे pollen tube entry କଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ବାଟ ଅଛି it can come from the chalazal end it is called a chalazogamy it can come through the integuments जो ଆମର integument ଦେଇକି ସେ ଆସିପାରିବ it is called as mesogamy or it can directly come through the micropylar end that is called as sporogamy. ଗୋଟେ concept ମନେ ରଖିବ always the pollen tube will come and reach at the micropylar end. micropyle ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ जो micropyle ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି या तो ଚାଲାଜା ଦେଇକି ଆସିଥିବ या तो से integument ଦେଇକି ଆସିଥିବ या तो से directly micropyle ପଟେ ଆସିଥିବ because you know the structure of ovule ovular placement କେମିତି ହେଇଥାଏ it can be orthotropous it can be anatropous it can be hemitropous it can be campylotropous there are different shape of ovule different types of ovule ଆଉ ovular arrangement ନେଇକି pollen tube ଟା enter କେମିତି କରିଛି you need to remember clear and inside that pollen tube କଣ ଆସିଛି ନା ଦିଟା male gamete ଆସିଛନ୍ତି how many male gametes are there first of all let's not be confused just understand what is male gamete and what is male gametophyte. Gametophyte is something which is holding the gamete. ଯାହା ଭିତରେ gamete produce ହେଇଛି ଯେ gamete କୁ carry କରିକି ଆଣିଛି the name ହଉଛି କଣ pollen grain କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ male gamete ହେଲା କିଏ ନା ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି reproduce କରିବ ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି fuse ହବ ଗୋଟେ male gamete ଗୋଟେ female gamete ସହିତ fuse ହେଇକି finally କଣ formation କରିବ zygote formation କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ fertilization definition ରେ ବି କହୁଥିଲେ the process of fusion of two dissimilar male gamete and female gamete to produce a diploid zygote which eventually leads to formation of an embryo which called as fertilization. Yes or no? ଯଦି fertilization ପଚାରିବ ତାହେଲେ କଣ answer ଦେବା ନା the process of fusion. Process of fusion. କାହାର fusion ହେଇଛି ଦିଟା ଜିନିଷର two dissimilar. Yes or no? Dissimilar. Male is smaller and female is larger. So dissimilar male gamete, haploid male gamete and haploid female gamete to produce a diploid zygote. To produce a diploid zygote, which eventually leads to formation of an embryo is called as fertilization. ଆଉ ଏ ଯୋଉ fertilization ଅଛି fertilization କଣ ହେଇଛି ନା the pollen tube ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛି the male gamete. One of the male gamete will go. Let me change the color over here. One of the male gamete will go and fuse with the egg cell. ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି synergid ଦେଇକି ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା egg cell ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା and then ସେ egg cell ଟାକୁ fuse କରି କୋଉଥିରେ convert କରିଦେବ now the egg cell is no more egg cell
After fertilization, the egg cell will become what? The egg cell will become zygote. Se कोथरे convert ହେଇଯିବ zygote ଗୋଟେ diploid zygote रे convert ହେଇଯିବ. And the second male gamete will again go through the synergids and finally go and fuse with the polar nuclei, or you can say the secondary nucleus. Polar nucleus যদি কহিପାରିବା তাহলে nuclei means two nucleus, or you can say secondary nucleus ତା ସହିତ ମିଶିକି କୋଉଥିରେ convert ହେଇଯିବ ଏମାନେ ଆପସ ତିନିଟା fuse କରିକି ଆମେ କଣ convert କରିଦେବେ polar nuclei will convert into primary endosperm nucleus. What convert ହେଇଗଲା primary endosperm nucleus, and then what will happen, the central cell, ये जो central cell पिलामाने थिला it is central cell, it will convert into primary endosperm cell. Remember ये जगह मन रखिबो. Okay, सुभुनी बोल से. Okay, okay, now listen carefully. कौन जिनस एटी हिची, we are having an embryo sac. ये embryo sac रो ना हैला कौन female gametophyte. ये embryo sac पाखु किया आछि ना pollen tube आसी पहुंची कोठी in the micropylar end. Micropylar end रे pollen tube is carrying two male gametes. कितना? Two male gametes. One of the male gamete will go and through the micropylar end, through the synergid, it will reach the egg cell, and here it will fuse with the egg cell to produce a diploid zygote. And the secondary male gamete, the second male gamete thila, it will go again through the micropylar end, through the synergid, and reach at the central cell, and kaha pakhre pahunchile in the polar nuclei, and they fuse with the polar nuclei to produce a primary endosperm nucleus. Likhi dau jara full form ta hela primary endosperm nucleus. This primary endosperm nucleus is a triploid thing. ये कौन अच्छी पिला मैंने ट्रिपलॉइड अच्छी तो आपको ही हमें कहोचे ट्रिपल फ्यूजन. Yes or no? First of all, one of the male gamete will go and fuse with the female gamete to produce a diploid zygote. This very process is called as syngamy. Yes or no? This very process is called as syngamy, and after syngamy, what will happen? After syngamy, the another male gamete will go through the micropylar end and it will reach at the central cell, and here it will fuse with the polar nuclei to produce a primary endosperm nucleus, and this is called as triple fusion. ଆମେ କଣ କହୁଛେ ट्रिपल फ्यूजन बोली कହୁଛେ. तो syngamy and triple fusion এই দুইটাକୁ ଆମେ ମିଶେଇ କଣ କହୁଛେ double fertilization. First fertilization here, second fertilization here, it is called as double fertilization. तो fertilization सरला ଏବେ ମୋ କାମ ସେଠୁ start ହେଲା कि fertilization ପରେ what is happening. Then so what will happen, so first of all remember what will happen after fertilization. Post माने कौन आसला कि पिला माने post माने होची after. After fertilization, what will happen? The three antipodals will degenerate. ये कौन हिजवे? They will start degenerating. आंकड़ा कुछ काम नहीं. After fertilization, post fertilization, what will happen? The three antipodals will get degenerated. Then the two synergids, ये जो synergids छिले, ये जो filiform apparatus छिले, they will also start degenerating. ये सुनो एमाने भी डिजेनरेट कर जिवे. सो बेसिकली हेला कोन एठी कोन जिंस हबा को जाउची. तो इनिशियली इन द embryo sac you are having 8 nucleated 7 celled condition. ये जो 7 cell भितरु after fertilization 5 cell will get degenerate. पांचटा सेल कोन हे गले degenerate हे गले. से पांचटा सेल भितर की अछंदी ना तीनटा antipodal अछि प्लस दीटा synergid अछि. Yes or no? 3 antipodals present at the salazal end and 2 synergids present at the micropylar end. The 3 plus 2 is equal to 5. So ये जो सातटा सेल भितर पांचटा सेल हे गले degenerate, and the remaining 2 cells रहिले से remaining 2 cell की अछंदी. Now one is the zygote present at the micropylar end, and second is the central cell. They convert ହେଇଯାଇଛି primary endosperm cell. Remember बुझी ହେଲା ना नहीं? Let me know in the comment box chat section. कौन जिनसे कहली ना after fertilization the first change कौन है ना after double fertilization triple fusion. First of all remember what is double fertilization, what is triple fusion. double fertilization माने हैला कि गोटे थरा syngamy हिची गोटे थरा triple fusion हिची.
যেহেতু দ্বিতীয় থর fertilization হয়েছে, that's why it is called as double fertilization. And after double fertilization, okay, good. Now after double fertilization, the central cell will become primary endosperm cell, and the zygote will become the egg cell will become zygote. Our say zygote convert over both embryo convert. Done. So in today's class, we are going to discuss about this, how this primary endosperm cell will convert into endosperm, and what is endosperm, and how many type of endosperms are there. Also endosperm माने को जगह अच्छे को planet रे केमिटा endosperm देखा जाए ताको type कौन ताको formation किंतु हेची, why it is being formed. This one, to understand any topic, you just ask this 5 basic question to yourself. The 5 basic question answer तम जो दे पारुछा, then you are very able to understand the entire segment. And the 5 basic questions are what, when, where, why, and how. You should know a ପାଞ୍ଚଟା question. Suppose today we are going to discuss about endosperm. The very first question which will arise at your mind, with our curiosity is about that what is endosperm, where it is being found, when it is found, and why it is occurring, and last is how it is occurring, the mechanism. କେମିତି ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି. If you try to answer all these 5 questions, then tomorrow basic understanding of endosperm clear. Then council in the CHC examination, AHC examination, we are going to be asked about this endosperm. Endosperm तमको 2 mark question as परिबो, types of endosperm as परिबो, बा ए chapter रू तमको 1 mark question तमे expect कर परिबो. But in your NEET entrance examination, we are going to be asked the 4 mark question from this endosperm side. So thank you. Be very clear about this entire segment. Done. Okay. ठीक से सुनी होनी. Okay, maybe some technical glitch is there. I am trying to fix it very soon. हाँ, देखो पिला मैं एठी voice raise करी कहूची, एकदम clearly देखि पारथुव कि what are the thing before fertilization and after fertilization कौन जिंस होइछ. Before fertilization, your calyx, corolla, androecium, style, stigma, ए जहाँ भी जो जिंस थिले ये सब without फेज, without means सब झड़ी छी, केही भी किछि रहिबे नै. ठीक है, स्पेलिंग एटा मिस्टेक अछि, let me correct the spelling for you. This is androecium. Listen, so जो calyx थिला, what is calyx? Group of sepals. What is corolla? Group of petals. Calyx ये थिला group of sepals. Corolla के थिला group of petals. ये जो androecium के थिला, androecium थिला group of stamens. Group of stamens. Then तापर जो gynoecium थिला, से gynoecium रो तीनटा पार्ट थिला, गोटे ला stigma, गोटे ला style, आ गोटे होची ovary. ठीक अछि. तो ये सब जिंस भितर only ovary will remain functional, because ovary will directly convert into fruit. Ovary ta after fertilization, post fertilization, ovary will convert into fruit. But the calyx, the corolla, the androecium, the style, the stigma, they all will wither off. Yes or no? I mean, कई रही मैंने सब झड़ जाए. Then ये जो ovary चारिपट जो ovary रो wall थिला, that ovary wall will convert into pericarp. Yes or no? Ovary रो wall, ovary चारिपट जो wall like structure थिला, that wall will convert into pericarp. Pericarp ता आगुला हमको fruit रो बिया covering है कि रही पड़ियो. Then mango वाला fruit हम जो खाऊ जे pericarp, epicarp, mesocarp, endocarp. The mesocarp वाला part we eat, the fleshy plum, the fleshy जो माउस का पार्ट रोची मैंगो रो, that is called as pericarp, जाको हमें खाओचे सेट कवरिंग रे.
Then ये जो ovule ଅଛି ପିଲାମାନେ, that ovule will convert into seed. Ovule will convert into seed. Ovary will become fruit, and inside that ovary, the ovule will become seed. Next, the integuments. जो बाहर पड़े जो integuments माने थिले, से integuments माने cover ହେଇଯିବେ, convert ହେଇଯିବେ କୋଉଥିରେ, seed କୋଉଥିରେ convert ହେଇଯିବେ. The integuments will converted into seed codes. What are integuments? Integuments can be one, integument can be two, unitegmic or bitegmic. तो ये जो बाइटेक्मिक इंटेगुमेंट थिले ये हमर ओव्यूल रा चारिपटे कवर करिकि थिले, लिविंग अ नैरो पैसेज एट द एंड जहां को मैं माइक्रोपाइल बोली कहउतिले. दिस टू इंटेगुमेंट विल कन्वर्ट इन फ्यूचर इनटू सीड कोर्स, एंड द आउटर इज कॉल्ड एज टेस्टा. This outer is called as testa. Outer टाको हमें टेस्टा बोली कहिबा, and the inner is called as tegmen. मन रखियो भल से कौन इंसर्ट ହେଇची ना, ovary will become fruit, ovule will become seed, ovary wall will become pericarp, and the integuments will become seed codes. Integuments can be one, integuments can be two. If it is one, it is called as unitegmic. It is two, it is called as bitegmic. Also, bitegmic जो जीटा अछंदी, the outer one is called as testa, and the inner one is called as the tegmen. These are the two seed codes. Seed was covering and the seed code will call it. Micropyle will remain micropyle. It is same here because micro means what? Micro means small, but tiny, but little, and pile means pore. The pile माने pore. अब ये pore टा न रहिले ता भीतर air, oxygen, water केमते एंटर करी. So for entering of the air, oxygen, और ये जो water जो आप पाएंगे, micropyle will remain micropyle. ये present है कि थिवा. After fertilization also micropyle will remain micropyle. Now the funicle will become stalk of the seed. Funicle, you remember? What is funicle? को जगह थिला funicle टी. Funicle उटा attachment न थिला. Placenta सहित attach करथिला ovule को. That is called as funicle. Inside that ovary भितर किया आसिला, ovary भितर cavity आसिला, that is called as locule. से locule भितर पिला माने किया आसिला, locule भितर आसिला placenta. और placenta भितर को माने थिले ना, placenta भितर ovule थिले. So one ovary can contain one ovule, or one ovary can contain multiple ovule. If you see mango, गोटिए आंबो रे गोटिए टाका अछि. Then, but if you see papaya, जो तुम अमृतभंडा देखियो, papaya देखिबो, तो ता भितर multiple seeds अछि. Ovary is one, but ovules are many. So ए जो ovule माने अछंती, that ovule gets attached, to the placenta through a floral stalk that is called as funicle. Yes or no? देखिए अपन सबसे बड़ा एग्जांपल होची pea plant. You remember Gregor Johann Mendel? Gregor Johann Mendel काम करथिले काहा ऊपर during his experiment से काम करथिले pea plant ऊपर. Pea plant scientific name was Pisum sativum. से pea plant रे जो pea अछि तमे ताको अबिगा तार pot ताको खोलिबो, pea रा pot खोलिबो, you will see the 5 or 4 to 5 pea seeds जो बनथिबे से अटैच हेथिबे का सहित ना ता प्लासेंटा सहित. Marginal presentation, so marginal placenta सहित attach हेथिबे like this. Then out 8 समझते attach हेथिबे ए भले. तो ए जो पार्ट रही गला आपको हमें फ्यूनिकल कहउछले जोटा आगो जाई कि स्टॉक ऑफ द सीड. सीड रे गोटे स्टॉक है कि ता सहित अटैच हे कि रही. इफ यू ओपन एंड पी प्लांट, जो पी को तमे ओपन करिवो तो देखियो एटे मार्जिन ए सब मटर मानस एमति लागे कि. नेक्स्ट, द न्यू सेलर्स. न्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट. एवरी ईयर एक क्वेश्चन रे पतरा जाए. न्यू सेलर्स आगो जाई कोथरे कन्वर्ट हेची, पेरिस्पर्म रे कन्वर्ट हेची. न्यू सेलर्स कन्वर्ट इनटू पेरिस्पर्म. What is nucellus? Nucellus के थिला ना डिप्लॉयड सेल थिला, ग्रुप ऑफ सेल्स थिला. nucellus टिश्यू एक थिला जे कि नरिशमेंट प्रोवाइड करथिला काहा को, टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, और यू कैन से द एम्ब्रियोस ता को जे नरिशमेंट दोथिला से जो nucellus टी तारी ना हो जे पेरिस्पर्म से आगो जाएंगे. द persistent remaining of the nucellus will convert into perisperm. अब आपको देखियार सबटु बेस्ट एग्जांपल हैला ब्लैक पेपर. no, गोलमरीच ब्लैक पेपर. The black paper देखिबो तामे किछि व्हाइट कलर पार्ट्स सब छांडी, that is nothing but the persistent or remaining nucellus. That is a part of nucellus which remain present after fertilization, and that is called as perisperm. Then एबे तम कहिछि कोन हबो नै जो जाइगोट अछि, जो egg cell अछि, egg will become your zygote. Egg convert जो जाइगोट रे,
and ये जो synergids माने अच्छे they will disintegrate and disappear. Synergids किसी काम नहीं तो disappear करते हैं. तो starting गला कोठो अभी क्या कोठो flower structure. Flower की अच्छी calyx, corolla, androecium and gynecium. Calyx, corolla, androecium आहो काम सॉरी गला they will degenerate with her of. And ये जो gynecium अच्छी gynecium contains कौन stigma, style and ovary. So ovary will very important. Ovary will remain functional to become fruit, and the stigma and style they will degenerate. Ovary wall will become pericarp. Ovule will become seed. Ovule कौन है जो seed is जो integument will become seed course. Outer integument will become testa. Inner integument will become tegmen. Micropyle will remain as micropyle. Funicle will become the stalk of the seed. Nucellus, the persistent remaining of nucellus will convert into perisperm, egg into zygote, which eventually develops into an embryo. ये जो egg अच्छी egg आगु जाइके zygote है after syngamy, and after syngamy the zygote will convert into embryo. ये है बात. You need to remember this. And synergids will disintegrate and disappear. Clear? No. See, so what will happen after post-fertilization? The endosperm will develop. Second, the embryo will develop. Third, the ovules will convert into seed, and then the ovary into fruit. तो जब ध्यान से देखियो जो लिखा है ovules bracket s लिखा है तो ovule can be one, ovule can be many. If ovule is one, then seed is one. If ovules are many, then seeds are also many. Clear? Ovary will convert into fruit. So these are the post-fertilization events. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हबो, एम्ब्रियो डेवलप हबो, ओव्यूल टा सीड रे कन्वर्ट हबो एंड ओवरी फ्रूट रे हबो. So very carefully look at this picture. एटी कोन हेजी, this is the egg cell, and ए जो egg cell अछि it will convert into the zygote. आ जो zygote टी आगो जाय convert हबो embryo. But remember पिले माने जो embryo develop होजी, to develop an embryo basically what is happening, the zygote is dividing. The zygote is dividing because you know in biology cell division is equal to cell multiplication, and to divide a cell or a multiply a cell we need energy. Yes or no? We need energy. From where we should get that energy? Because the micropyle is no longer, the synergids are no longer there, the antipodals are no longer there. So from whom the zygote, the developing embryo will get that energy? तो से एनर्जी केमिति आसीबो, से एनर्जी सोर्स को हम कंफर्म करिया पई कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डेवलप स्टार्ट डेवलपिंग द एंडोस्पर्म. बुझा पड़से गोटे सेल टी अछि, से सेल भीतर जाइगोट टी अछि. जाइगोट एज अ डिप्लॉयड सेल इज गोइंग टू डिवाइड again and again or divide repeatedly to produce an embryo. How to produce an embryo? It requires energy, it requires nutrition, it requires nourishment. So from where it will get that nourishment? Our answer होची endosperm. जहाँ हमें triple fusion रे the central cell को हमें convert कर देथिले primary endosperm cell. The polar nuclei by the secondary nucleus को हमें convert कर देथिले primary endosperm nucleus. तो से जो PEN, से जो PEC से आगो जाएंगे convert हो जाने को थे endosperm रे. Just to let it know that embryo जो develop होगा ता ପାଇଁ कि just to ensure कि embryo development ପାଇଁ कि जो खाଇବା दरकार, जो food दरकार, जो energy दरकार, it will be uh, covered in the endosperm development. सुन नो तो endosperm ଟା develop हेले ही तापर embryo development करबा. सेति ପାଇଁ कि तुम book रे गोटे बढा लाइन टे लिखा है and that line is known as endosperm development precedes embryo development. Remember this part. Always endosperm development precedes embryo development. Embryo development କରିବା ପୂର୍ବରୁ endosperm ଟେ develop ହବା ନିହାତି ଦରକାର.
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रे आमे देखिबा कहा कहा कथा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखिबा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट सहित आ कोन देखिबा एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखिबा yes or no एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखिबा देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखिबा तापरे ओव्यूल केमते सीड रे कन्वर्ट हबो एंड ओवारी केमते फ्रूट रे कन्वर्ट हबो बट ये सब जिंस करिया पूर्व फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग होची कोन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आ जे पर्यंत एंडोस्पर्म बनेनी आमे जाइगोट को इंश्योर करि परिबा नै कि से आगो जाई कि एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हबो तो एंडोस्पर्म केमते डेवलप होची से विषय लेट्स नो सी the primary endosperm cell divides repeatedly to form a triploid endosperm tissue. Clear? The cell, it tissue. You know very well what is cell and what is tissue. Yes or no? My dear students, cell out tissue are different. Tissue is group of cells having a common origin and doing a similar kind of function that is called as tissue. A cell to tissue रे convert ହେଇଛି ମାନେ cell ଟି repeatedly ବାରମ୍ବାର କଣ ହେଇଥିବ divide କରିଥିବ ଆଉ cell ଟି divide କରିଛି ମାନେ cell ଟି multiply କରିଛି ଆଉ ଯଦି multiply କରି ଯୋଉ group of cells the bunch of cells will produce that bunch of cells will convert into triploid endosperm nucleus. First of all ବୁଝିପାରିଲ ତ କାହିଁକି triploid ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ haploid diploid triploid ର ମାନେ କଣ these are ploidy number chromosome number because ଆମେ ଯୋଉ triploid କହୁଛେ ଏଥିପାଇଁ କି ନା ଏଠି ଦିଟା female ର part सेंट्रल सेल दीटा पोलर न्यूक्लियस थिला और गोटे मेल गैमेट टी तो टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट ये दिस इज हैप्लॉइड दिस इज हैप्लॉइड दिस इज हैप्लॉइड तो तीनटा हैप्लॉइड मिसी की इट इज ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन दछ तो गोटे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगु जाई कन्वर्ट हे जो कोथरे प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू good group of cell make tissue having similar origin to perform a particular function very good Mona Lisa now the endosperm cells are the filled with reserve food materials. Can you see this? Two part कहूଥିଲି ये endosperm tissue रे कौन अछि ना reserve food material अछि जे कि store ହେଇକି ରହିଛି କାहा ପାଇଁ କି ନା for the embryo developing embryo ତାକୁ nourishment provide କରିବା ପାଇଁ କି and they are used for nutrition କାହା ପାଇଁ यूज କରାଯାଉଛି for the developing embryo को nourishment ଦେବା ପାଇଁ କି nutrition ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ grow କରୁଛନ୍ତି देखो ये पार्ट का these are the three antipodals. Antipodals present Ashman. This is a chalazal end. Yes or no? This end is called a chalazal end because chalazal end पाखरे antipodal cell बने रहिबे और chalazal रो ठीक opposite रे क्या सुजिबो chalazal ठीक opposite रे क्या सुगला micropylar end. Which end? Micropylar end. Then तो एपट रहा chalazal end एपट रहा micropylar end ये micropylar पटे कौन थिला synergid cells are there how many synergids are there two synergids are there and there is a large centrally के थिला गोटे egg cell टी थिला ଆଉ egg cell टी after fertilization कोसे convert हेई गला zygote रे convert हेई गला and the second male gamete will go and fuse with the polar nuclei present in the central cell as a polar nucleus से fuse करिकी गोटे triploid endosperm टे बनै देबे the triploid endosperm जो अछि it will start initiating and start proliferation जेटा वर्ड रे माने बुझो इनिशिएशन माने कोन हेछि स्टार्ट हेछि इनिशिएशन माने स्टार्ट हो जो बिगिन हो छै आरंभ हो छै एंड प्रोलिफरेशन माने से आगो जाय कि मल्टीपल कर छै मल्टीप्लाइंग proliferation it initiate kala by start kala process of endosperm development of आरंभ होला and simultaneously the cells it present inside the endosperm it will start multiplying तो एट हम देखिबा कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कोन तुम एंडोस्पर्म जानि गलो क्लियर आइडिया आसी गला till now you are having a very clear idea that what is endosperm this very diagram is from your NCERT book NCERT book तुम देखि परछो कि जो synergids माने कोन होचनी degenerate हिचंदी then the zygote जो अछि towards the micropylar end it will convert into the embryo zygote ago jai कोथरे convert हबो ना embryo रे convert हबो and to become embryo zygote embryo हवा को हेले it requires nourishment it requires nutrition it requires energy ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦବ କିଏ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟି ଅଛି ଏଠି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଟା ଯୋଉ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ସେଲ ଇଟ ୱିଲ ରିପିଟେଡଲି divide and produce endosperm tissue ଆଉ ଏଇ endosperm tissue ବନେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର final formation ହବା start and antipodal will degenerate ये ସବୁ
डिजेनरेट कर जिवे जो टू सिनर्जिड थिले सी भी डिजेनरेट करि गले तो रहिला किए ओनली टू थिंग्स वन इज द सेंट्रली प्रेजेंट एंडोस्पर्म and one is towards the micropolar end one embryo is there zygote is there clear okay now I will tell you how many type of endosperms are there okay now okay endosperm जो अच्छी basically it is of three types कितने type ला three types ला one is free nuclear second one is cellular and the third one is heliobial endosperm मैंने simultaneously note करी चलू था जहाँ जहाँ इठी लिखुची done one is the free nuclear endosperm second is the cellular endosperm and third one is the heliobial endosperm कौन कौन मान देखो see if I draw a cell if this is the micropyle and this is the chalaza এই মঝিরে কোন আছে না আমরা PEN প্রেজেন্ট আছে কোন না PEN what is PEN primary endosperm nucleus what is its ploidy number it is triplet always remember এই জিনিস ভুলিবানি endosperm মানে triplet ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି କଣ ଥିଲା ଆମର zygote ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା yes or no what is this na this is the zygote which is diploid in nature clear done now what will happen এই জায়গাରେ କଣ ହେଇଛି ଜିନିଷଟି ଦେଖ ଅବିକା ନା ଏଇ ଯୋଉ PEN ଅଛି what is PEN the primary endosperm nucleus it will start dividing and it will divide again and again but ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଲ ଡିଭିଜନ କଥା ମନେ ପକେଇବ ସେଲ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ମାଇଟୋସିସ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କାରିଓକାଇନେସିସ୍ and second is cytokinesis so if I tell about free nuclear endosperm here the karyokinesis is not following the cytokinesis is not following the karyokinesis ବୁଝିଲା କଣ କହୁଛି ଏଠି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେଲଟି ଅଛି ଅବିକା it will remain the same and ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେ ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଜାଇଗୋଟି ରହିଲା but ଏଇ ଯୋଉ PEN ଅଛି primary endosperm nucleus ଟି ସେ divide କରିକି 1 ରୁ 2 2 ରୁ 4 4 ରୁ 8 8 ରୁ 16 16 ରୁ 32 ଏମିତି ସିଏ multiple divide କରି ଯାଉଛି can you see this thing କଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ nucleus ଟି ଥିଲା the nucleus started dividing again and again usually what happens now once the nucleus get divided that means karyokinesis has been done and after karyokinesis what will be the second stage that is cytokinesis the cytokinesis will always follow karyokinesis but in here in this case the cytokinesis is not following the karyokinesis ठीक अच्छे जो नेक्स्ट विभाजन ହେଇଗଲା ତାପରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହଉନି that's why କଣ ହଉଛି ନା one cell is having multiple nucleus ଯାହାକୁ ଆମେ sinusitic condition କହୁ multi nucleate condition କହୁ you remember tapetum you remember in the fungus 11th class ରେ I have taught you about kingdom fungi ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ condition mycelium ଭିତରେ ଥିଲେ aseptate and sinusitic condition तो जोटी सेप्टम absence रहेगा सेट sinusitic condition आस्तला and what do you mean by sinusitic condition sinusitic means having multiple nuclei is there multiple nucleus is there then and सेटा केमती हेची ना here the cytokaryokinesis परे और cytokinesis होनी ता माने karyokinesis हेगला but cytokinesis तापर होनी so as a result a single cell is having multiple nucleus ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଫ୍ରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ ବଟ୍ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ନା ଆଗକୁ ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ର ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲଟେ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିବ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲଟି ଆସିବ
A, a large central vacuole. जे कि कौन करियो ना पुश कर दबा काहाकू all those nucleus को पुश कर दबा towards the periphery. Then जो न्यूक्लियस सारे सेंटर रे अरेंज ହେଇକି ଥିଲେ ऑर्गेनाइज ହେଇକି ଥିଲେ हठात suddenly there will be a formation of a large central vacuole and a large central vacuole will push the nuclei towards the periphery. और जब माने पेरिफेरी आडू आसीबे you can see ए जो पेरिफेरी जो सेल वॉल टी अछि से सेल वॉल टी कोन करबो ना start invading and it will cover the nucleus. ये बे न्यूक्लियस को कवर कर जीवो एंड आ चारिपटे बे वॉल फॉर्मेशन हबो आ वॉल फॉर्मेशन हेकी ये सब गोटे गोटे सेल रे कन्वर्ट हो जिवो न्यूक्लियस विल नो लॉन्गर रिमेन न्यूक्लियस इट विल कन्वर्ट इनटू अ सेल बुझेला कोन जिंस होईची एंड तापरे ए जो साइटोप्लाज्म टी अछि इट विल स्टार्ट थिकनिंग और साइटोप्लाज्म थिकनिंग हला परे द वैक्यूल कैन रिमेन और वैक्यूल कैन आल्सो ए जो वैक्यूल थिला the vacuole can remain or the vacuole can disappear ये रही भी परिबो आगु जाई कि नॉलेज से disappear भी हे जिवो ता कंडीशन देखि बुझिला पिला माने आई एम स्टडीिंग अबाउट कहा विषय कहू तुमको आई एम टेलिंग अबाउट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कथा पडिछि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोन कहला एठी ना देयर वाज एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक भीतर कोन अछि जाइगोट बनेछि आफ्टर जाइगोट इज फॉर्म and then the PEN is there, primary endosperm nucleus is there. The PEN will start dividing again and again. It will do karyokinesis. That means nuclear division, prophase, metaphase, anaphase, telophase. That's much karyokinesis and produce multiple nucleus. And the cytokinesis will not form here. Cytokinesis habani. Cytokinesis habani. Next, what will happen? There will be producing a large central vacuole, and that vacuole will push the nuclei towards the periphery और जब से माने periphery को पळे आसीबे आको चारि पटे बे सेल वॉल फॉर्मेशन हवा स्टार्ट हबो बाय किछिटा न्यूक्लियस सेमति फ्रीली से माने लिक्विड फॉर्म में to understand this topic let us imagine about the tender coconut का विषय भाबिबा ना गोटे टेंडर कोकोनट कथा भाबो you remember what is tender coconut is nothing but koida listen coconut कौन थिला टेंडर कोकोनट माने कौन की गोटे पॉइड तो पॉइड में जो पानी नहीं की द कोकोनट रो वाटर द कोकोनट मिल्क दैट इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो हम कौन कहूचे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहूचे दैट इज रिच इन एनर्जी रिच इन विटामिन रिच इन मिनरल जे की बॉडी को गले माने बॉडी को रिजुविनेट करे देता है yes or no that's why the enormous power put was cheap because it is not a normal water coconut water is not a normal water not a simple water rather it is called as the free nuclear endosperm clear बट जो सेलुलर एंडोस्पर्म में कौन होची जदि मैं सेलुलर एंडोस्पर्म কথা देखियो सेलुलर एंडोस्पर्म में कौन कौन इंसर्ट रहला if I look into the cellular endosperm एठी कौन कौन जिंस आसीबो सेलुलर रे फ्री न्यूक्लियर समझते बुझी पाइला ओके कोकोनट वाटर यस लिक्विड एंडोस्पर्म सुचिस्मिता यस ओके गुड now we'll currently move into जिबा नेक्स्ट सेगमेंट को ताना हैला सेलुलर एंडोस्पर्म तो सेलुलर एंडोस्पर्म में कौन हेची ना अगेन से जो पीईएन अछि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अछि इट विल स्टार्ट डूइंग कैरियोकाइनेसिस एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस विल occur देन कैरियोकाइनेसिस भी हबो एंड इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस भी हबो और जब दीटा को जिंस हेची तो एटी कौन हेची ना देखो एठी एटा रहिला तमरा गोटे जाइगोटी रहिला एंड एठी ये डिवाइड है कि डेटा अलग अलग सेल ले कन्वर्ट हो चंदी तो ये भी गोटे सेल हे गला ये भी गोटे सेल हे गला कारणा एटी सेल वॉल फॉर्मेशन है ताहा भितरे आ तक हम कोन कहबा एठी ना सेलुलर एंडोस्पर्म बोली कहबा सेलुलर एंडोस्पर्म जानि पाइला समझते ओके ओम प्रकाश सुचिस्मिता
तुम जो मन सब क्लास रे अच्छो अटेंड करछो बुझुचो क्लास रे एंड रे आई विल आस्क सम क्वेश्चंस आ उसी क्वेश्चन आंसर देके तुम प्रेजेंस को तुम अटेंडेंस को आउरी क्लियर करेबो सिग्निफिकेंट करेबो तो इन सेलुलर एंडोस्पर्म व्हाट विल हैपन रिमेंबर द व्हाइट कर्नेल ऑफ द कोकोनट ठीक अछि जो कोकोनट रो व्हाइट कर्नेल थिला से व्हाइट कर्नेल को हमें देखिबा दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म बेसिकली पिला माने कोन हेता है ना प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो थे इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द केस ऑफ मोनोकोटिलिडन्स ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସେଲୁଲାର ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ରହିଲା ଏଇ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜାଗା ଦେଖାଯିବ ହାୟର ଜାଗା ଦେଖାଯିବ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଦ ଡାଇକଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ତ ଡାଇକଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର କିଏ ଡାଇକଟ୍ ରେ ଗୁଆଭା ପଳେଇ ଆସିବ ଡାଇକଟ୍ ରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପଳେଇ ଆସିବ ଡାଇକଟ୍ ରେ ତ ଏଠି କୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ନା ଏଠି ଆସିବ ଆମର କୋ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ସେଲୁଲାର ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଟି ଅଛି ଦ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ କ୍ୟାନ୍ ରିମେନ୍ after formation of seed or it can utilized completely fully during the formation of seed or during the developing of that embryo development रे या तो एंडोस्पर्म टी पूरा का पूरा सड़ जाइथिबो या तो किछिटा पार्ट रिमेनिंग पार्ट रह जाइथिबो तो किछि रिमेनिंग पार्ट रहुची after formation of seed if endosperm is remaining then in that case the seed is called as albuminous seed or endospermic seed and if after formation of an endosperm embryo the endosperm is completely vanished the endosperm is completely utilized then it is called as non-endospermic seed or you can also call it as X-albuminous seed. Question will be asked from here. So carefully ଶୁଣିଥାଅ कि endosperm formation ହେଇସାରିଲା ପରେ endosperm ର କାମ ହଉଛି nucleus जो embryo को nourishment provide କରିବ. So during the providing of nourishment କିଛି endosperm remaining ରହିଯାନ୍ତି କିଛି endosperm completely utilized ହେଇଯାନ୍ତି. ଯଦି completely utilized ହେଇଯାଇଛି then it is called as X-albuminous seed ଆଉ ଯଦି କିଛି remaining part ଅଛି then ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା albuminous seed ବୋଲି କହିବା जो free nuclear ସରିଲା cellular ସରିଲା last ବସିଲା କିଏ helobial endosperm helobial endosperm ଟେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛି ନା helobial endosperm ଟେ ହଉଛି basically intermediate what do you mean by intermediate ना intermediate माने ये मझिया मझी रहिଛି एठी दुईटा को जिंस होची एठी cellular endosperm formation होची एठी nuclear endosperm formation होची remember this is your micropyle end this is your chalazoid end micropyle पटे की अछि zygote is there and it center रे की central cell की अछि endosperm is there so first the endosperm will do cellular development सेलुलर टाइप डेवलपमेंट करिवो माने कोन हबो ना ए जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस छिला से आगो जाई के डिवाइड हे जिवो दुटा सेल रे वन इज द लार्ज सेल वन इज द स्मॉल सेल गोटे बड़ सेल टी बनेइबो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल और छोटो सेल टा बनेइबो टुवर्ड्स द चैनल क्लियर तो फर्स्ट से केमते डिवाइड करछि फर्स्ट से डिवाइड करछि सेलुलर तो इट फर्स्ट केमते डिवाइड हबो फर्स्ट हबो जस्ट लाइक सेलुलर মানে এটি নিউক্লিয়াস ডিভাইড করছে কারিওকাইনেসিস সাইটোকাইনেসিস both are occurring কারিওকাইনেসিস and সাইটোকাইনেসিস both are occurring সেকেন্ড কোন হবো না সেকেন্ড কোন হবো না এই যে উপরে যে বড় পার্টটি আছে that is called as the micropylar end जो न्यूक्लियस जो पीएनटी ଅଛି and এপଟେ ଅଛି তম চালাজাল এন্ড ছোটটি जो ଅଛି আঙ্ক ভিতরে जो न्यूक्लियस মানে ଥିଲେ the nucleus will start dividing just like nuclear division माने कौन है बे न्यूक्लियर डिवीजन भलिया डिवाइड करबा स्टार्ट करिवे माने सेकंड वन इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माने हियर karyokinesis will occur but cytokinesis will not occur remember why it is called as helobial helobial तो कहीं को जो छी ना ये ऑर्डर हेलोबियल से माने को देखा जाती ठीक अछि हेलोबियल्स ऑर्डर रे बेसिकली ई वाला पार्ट सब देखा जाती इन एंडोस्पर्म देखिया को मिली थाए एठी जो एंडोस्पर्म डेवलप होई पिला माने it is developing into two stages जेटा स्टेज डेवलप होई the first one is just like the cellular and second one is just like the free nuclear cellular को होई now one endosperm will convert into two endosperm जेटा पार्ट डिवाइड हो गला one larger cell one smaller cell one large one small the larger is present towards the micropyle larger ta quad achi towards the micropyle and smaller one is present towards the salazal now what will happen next now inside the larger cell or inside the smaller cell the nucleus will start dividing again the nucleus remember cell and nucleus both are different things cell is the fundamental unit of life nucleus is the brain of the cell the cell divide karuchi that means nucleus bhi divide karuchi
बट न्यूक्लियस डिवाइड करछि माने या नुहे जे सेल डिवाइड करिवो रिमेंबर division of nucleus dividing of nucleus is called as karyokinesis and after karyokinesis usually the cell divides that is called as cytokinesis but in always सबबेले जिनसटी हबनी कि once karyokinesis occurred cytokinesis हब जरूरी नहीं so once karyokinesis hela par cytokinesis होनी that means what is happening inside a single cell multiple nuclei are forming बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्मेशन होची आ से बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हबा को हमें कोन बोलथिले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोली कहथिले तो हेलोबियल इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट बिकॉज़ here two types of endosperm development is being seen one is the cellular type endosperm second is the free nuclear type endosperm first or large cell then a small cell और large cell भितर कोन अछि ना बहुत सारा न्यूक्लियस बनिछि again a central large vacuole will come which will push the nuclei to the periphery and the periphery will start accumulating the cell wall will start accumulating the nucleus it will invaginate inside the nucleus and it will produce different cells endosperm cell formation हवा start होइছে डन फिर हमें देखिबा suppose this is the coconut water this is the coconut kernel and ये हेगला कोन हमला टेंडर कोकोनट जो नाली कोडर नाली थाए मन अछि कोडर बे लाइफ स्पैन जब देखि लाइफ साइकिल देखि और छोटिया फुलटे अछि से फुलटा ओभारी अछि ओभारी आगो जाई कि फ्रूट रे कन्वर्ट हबो तो छोटा गोटमाटे आइछि गोटमाटा स्मॉल पॉइड तार टिके बड़ पॉइड हबो देन फाइनल नोडिया रे कन्वर्ट से तो ए जो कन्वर्शन चलीछि आर भितर कोन हेछि ना फर्स्ट बनेला सेंटर रे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टा साइड को जाई कि पेरिफेरी को जाई कोन बनौछि हेलोबियल एंडोस्पर्म बा सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करूछि तो ए जगह तुम देखि परिबी नोडिया रो पानीटा से हेगला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नोडिया रो जो कर्नल टा रहिला नोडिया टा जो कोकोनट मीट जाको हम खाउछि द व्हाइट कलर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर एंडोस्पर्म और आंकर मझे मझे पार्ट टाको दैट इज कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म रिमेंबर फ्री न्यूक्लियर को जगह देखा जिवो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मोस्टली देखा जाए मोनोकोट्स माने करे मोनोकोट्स रे किए रहिला आर एग्जांपल जदि मु लिखि देबे एठी आर एग्जांपल को माने रहिले ना मोनोकोट्स माने मोस्टली मोनोकोट्स से पुनी को माने आसिले ना सीरियल्स माने आसिले सीरियल्स की अछि राइस इज देयर व्हीट इज देयर राइस व्हीट मेज ये सब हे गले कोन ना मोनोकोट रो सीरियल्स रो एग्जांपल ले जदि मु देखियो सेलुलर एंडोस्पर्म आर एग्जांपल कोन ना आर एग्जांपल होची कोन ना मोस्टली डाइकोट प्लांट्स ठीक अछि डाइकोट प्लांट्स मन पे देखा जाय एटी बीन हे गला ग्राउंड नट हे गला पी हे गला ए सब केस देखा जो कोन हमर सेलुलर एंडोस्पर्म देखा जो बुझेला पिला माने आई होप तुम माने बुझी पारथिबो एनी डाउट टिल नाउ डू यू हैव एनी डाउट ओके ओके got it see so in common endosperm development PN undergoes successive nuclear divisions to give free nuclei and this stage is called free nuclear endosperm here bujhela successive division means one after another one nucleus will start dividing and produce two nuclei then again the two nuclei will start divide and produce four nuclei then 4 to 8 8 to 16 16 to 32 and so on that is called a successive division. Second, the number of free nuclei varies greatly. Yes or no? The number of free nuclei varies greatly from plant to plant, from flower to flower, from fruit to fruit. They divide vary. Now, at the last, endosperm becomes cellular due to cell wall formation. अब endosperm cellular केमती होची cellular formation. अरे वो nucleus जो चारिपटा अबिका cellular पड़ा आसीबो तो cellular endosperm हे जोसी. Remember, ये जो double fertilization पूर्व हमें जो देखिथिले structure of embryo sac. If you remember the structure of embryo sac टी केमिति हेतिला ना monosporic development हेतिला yes or no तो 8 थिला गोटे MMC मन पके पार्ट टा तो ये थिला गोटे MMC मेगास्पोर मदर सेल ये मेगास्पोर मदर सेल दिस इज द माइक्रोपाइल दिस इज द जालाजा तो ये आगो कौन हबो ना ये थिला गोटे डिप्लॉयड सेल टी से आगो जाई कौन कला डिवाइड कला
डिवाइड केमिति करथिला ना मेयोसिस करथिला मेयोसिस करी कोन बनैथिला फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राइड फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राइड दिस इज थैलाजा दिस इज माइक्रोपाइल और जो चारटा टेट्राइड रू the three present towards micropyle will degenerate and the one present at the chalaza will regain functional megaspore कौन क्लास ये functional megaspore now ये जो functional megaspore टी थिला ये functional megaspore आगो जाएगी 3 टाइम माइटोसिस करछि कार्योकाइनेसिस 1 करी की आर भितरे गोटिए न्यूक्लियस रु जोड़ाई न्यूक्लियस देन तापरे कार्योकाइनेसिस 2 करिथिला कार्योकाइनेसिस 2 करी की जोड़ाई न्यूक्लियस रु चारटा न्यूक्लियस देन से कार्योकाइनेसिस 3 करथिला आ 3 करी की गोटिए सेल भितरे 1 2 3 4 5 6 7 8 आठटा न्यूक्लियस then hela kona three nucleus will go upward, three nucleus will go downward, and two will remain at the center. That means 3 plus 2 plus 3 arrangement divide ହେଇଗଲେ then जो तीनटा उपरु गले ताको चारि पटे सेल वाल इन्वेट करिकी इमेजिनेट करिकी ताको कवर कर देला एई पार्टटा हिच suppose this is your micropyle this is your chalaza then तो जो तीनटा न्यूक्लियस ऊपर को आस्तिले तांको चारिपटे कोन फॉर्मेशन हे गला सेल वॉल फॉर्मेशन हे गला ये जेटा हे गला सिनर्जिड ये हे गला एक सेल और जो तीनटा चला जा पटे थिले से तीनटा कन्वर्ट हे गले तीनटा कोथरे ना तीनटा एंटीपोडल सेल्स रे कन्वर्ट हो जाइथिले बट सेंटर रे जो डेटा रहिथिले से माने सेमति पोलर न्यूक्लियस रहिथिले जहा हमें कहथिले कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 celled condition 3 upward 3 downward and 1 at the center saturday cell but the nucleus देखिबे 3 upward 3 downward and 2 at the center that is what the answer when the nucleus division after division central vacuole आसिकी nucleus को push कर दोची towards the periphery periphery पटर की अछि cell wall अछि cell wall will invaginate and cell wall will cover the nucleus and form a cell simple बुझेला the number of free nuclei varies greatly endosperm becomes cellular due to cell wall formation cell wall formation ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଏବେ cellular ରେ convert ହେଇଗଲା now the tender coconut water is a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is a cellular endosperm देखियो पिला माने this is coconut water very very tasty very refreshing rejuvenating so ei jo rahila water tea it is nothing it is not a normal water simple water rather it is a free nuclear endosperm that's why nodia is called as sweet fala adre bahut energy achi ଆଉ ଆମେ जो fruit part ଟାକୁ ଖାଉଛେ the white kernel the meat coconut meat is nothing but the cellular endosperm clear and for your kind information addition dear students you can find out this ppt or you can find out this today's video class video tam pai paribo koti after login into शिक्षा ज्योति portal just ask to your coordinator course coordinator तुम स्कूल ले बा तमरा respective higher secondary school ले जो course coordinator अछंदी तांको सहित contact रे रहिबो and log in to the website by entering a QR code printed on admit card ठीक अछि द यूजर आईडी तुम पाइ जिवो आ तुम पासवर्ड ओके की तुम सेट तुमर पोर्टल ले you can find the notes you can find the pdf you can ask questions you can post your answer in writing and also in audio video format see dhsc is fighting you for all तमना पाई बहुत भलो जिंस से आनचंदी तमे पार्टटा देखि पारियो प्रीवियस स्लाइड ओके this one tender coconut water is a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm clear shall we go to the next slide next slide ko jiba okay done thank you now so depending upon the mode of formation of the endosperm is of 3 type endosperm kete prakar achi development of endosperm it is of 3 type nuclear endosperm primary endosperm nucleus divide kartila central vacuole appear and the massive peripheral multinucleus will form wall formation occurs and central vacuole disappear okay these all things are theory and it is just for information so ये पार्ट मन रखि दबो 2 मार्क क्वेश्चन तुमको हेल्प करिबो
Then nuclear endosperm कौन रहिला, cellular endosperm कौन रहिला, and halobial endosperm कौन रहिला. तो halobial कौन कहथिल पिला माने, the first division produces two cells within each of which free nuclear division occur, but ultimately they may also become cellular. For example, erymerus and asparagus. ठीक अछि, order halobial से दिटा part असला erymerus and asparagus. तो एटी कौन कहला कि first division is always cellular and then onwards free nuclear, which will ultimately convert into cellular. That's why the halobel is called as intermediate in between nuclear and cellular. Clear? Other, if you look at the function of endosperm, or you can say the fate of endosperm, the fate of endosperm कौन आसिला? In plants with albuminous seed, the endosperm reserves support early seedling growth. You know what is albuminous seed? Albuminous seeds means the endospermic seed. जो seed भितर endosperm टी रही जाइची. But during the growth of embryo, during the formation of embryo, basically it depends upon on the endosperm for its nourishment. But after the formation of the seed, some nourishment, some endosperm is still there, and that is called as albuminous seed. Also, albuminous seed the concurrency na reserve for this food material को for settling goods. For example, तुम स्कूल को टिफिन नहीं जाइছো, तो घरु खाई के आस्थिलो, कि टिफिन संगे नहीं के आस्छो, टिफिन को पे नहीं थिलो, ना टिफिन नहीं थिलो कि स्कूल रे ब्रेक रे भूख लागले खाई बोली. But let's say स्कूल जाली छुट्टी हे गला. और तुम सब जगह खाइबा न खाइ पारि किछटा लेफ्ट आउट छाड़ देइছো. देन तो जदी या तो टिफिन जो टेस्टी हेची त पूरा कंप्लीट हे गला. आ टिफिन जदी तमर भूख नाही तम जल्दी घर आसे टिफिन न अधा खाइ के आछो. तो जो अधा बंची गला दैट इज कॉल्ड एज कोन ना हमर एल्बुमिनस सीड बा एल्बुमिनस टिफिन जो हमर टिफिन बंची गला अधा पार्टटा सेम सीड जदी हम एंडोसोम किछि रिमेनिंग रहि जाउची nourishment देला परे भी किछि बंची के रहि जाउची इट इज कॉल्ड एज albuminous seed. And endosperm provides nutrition to developing embryo, and liquid endosperm of coconut water it contains auxin, cytokinin and gibberellic acid. It is very very important. मन रखिबो जो free nuclear endosperm अछि coconut water रे के present अछि, auxin भी अछि, cytokinins भी अछि and gibberellic acid भी अछि. All these three things are plant growth promoter. ये प्लांट जो ग्रोथ को प्रमोट करती माने basically it induces cytokinesis. Cytokinesis means division of the cell, and then when added to basic nutrient medium, coconut milk also induces the differentiation of embryo and plantlets from various plant tissues. Various plant tissues से वो plantlet बनना start करें. Done? Now it's time for the question answer. So let's practice some questions to understand this topic better. I'm going to भलसे बुझे हुए टॉपिक टाको. So let's कौन करिबा हम क्वेश्चन आंसर करिबा. So my first question to all of you, in a common endospermic development, what is PEN? PEN माने कौन? Primary endosperm nucleus ना primary embryo ना. Okay. First answer आसला कौन? Yes, very good. Very good, very good. समस्त आंसर है अच्छी. Actually ये क्वेश्चन आंसर टी तळे दिया जायछि. तो एटा तमन पई कि तमे चीटिंग न करे बोली मोर तम ऊपर आशा और भरोसा. देन तो एई क्वेश्चन तमे जदी न देखि आंसर दो तल बहुत बढ़िया. आ सब आंसर बुझ आ पड़ स्लाइड तम आंसर दिया. Next, in a fresh coconut, the fluid is dash. Coconut is जो fluid टा थिला, that fluid is nothing but the free endospermic nucleus. Very good. Yes. ओम प्रकाश स्वाई, शीतल मेहर, पद्मलोचन, अर्पिता, सोरजीत, कुमारी. Very good. Vishwaranjan, very good, very good. Keep answering like this. Next, third question. In a fresh coconut, the white kernel present inside is what? Option C, cellular endosperm. Very good. Yes, Jagdish, Sorajit. Yes, option C is the right answer. Good. Then question 4, in which plant endosperm is consumed by the developing embryo? Developing embryo रे को थी ଆମର endosperm टी consume हे जाउची. The answer is option A, dicot. Dicotyledon plant रे हम जे देखिबा ताले कोन हेछ ना सबटी कोन very good dicot plant रे हमेशा ठीक आंसर देछ. So proud of you. Last question, in which plants endosperm persist in mature seeds? Mature seeds से endosperm कोठी अछि? से क्वेश्चन देखो ऑप्शन चारटा को समान अछि. तो आंसर एटी कोन हबो? कैस्टर भी हे परिबो, जडा गच्छ आ ता सहित हमर एटी कोकोनट भी हे पारे जोडा एंडोस्पर्म अछि. देखिबा समस्त आंसर यस, ऑप्शन डी नुपुर, विजयलक्ष्मी,
Good, good. Sarojit, Ayush, समस्त right answer अच्छी. Congratulations to all of you. Now, एबे यार आंसर नहीं. एबे क्वेश्चन टिके पढ़ो. ठीक है, तुम स्क्रीन में झपसा देखा जाउथियो, but still तुम क्वेश्चन टा पढ़ो and try to answer me the question. Question number 41. Different book रो पिला माने क्वेश्चन नहीं कैसी एनसीईआरटी बोर्ड रो पेज अनुसार लाइन अनुसार क्वेश्चन अछि और ए टाइप रो क्वेश्चन तमर एंट्रेंस रे आसीओ. So get ready for that. So during double fertilization in plants, one sperm fuses with the egg cell and the other sperm fuses with dash. जने एक को फ्यूज करला और जने का को फ्यूज करिवो और जने फ्यूज करिवो सिनर्जिड ना पोलर न्यूक्लियई ना एंटीपोडल ना न्यूसेलर. आंसर इज पोलर न्यूक्लियई. देखा केते प्ले आंसर दैछंती. ऑप्शन बी केते प्लेकर ऑप्शन बी अछि. Yes, good. Option B is the correct answer. Very good. Option B is the correct answer. Good. Jagdish Prasad, Vishwaranjan. Good answer. Next, second question. Endosperm is generally what? Haploid, diploid, triploid, polyploid. No need to tell. କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. You know the answer. Endosperm is generally option B. B is the correct option. Yes. Endosperm कौन है एठी? Endosperm is good, good, good. Next, fusion of one male gamete with egg and other of the same pollen tube with two polar nuclei is dash. Fusion of one male gamete gotiye with egg, that is called as syngamy, and other of the same pollen tube with two polar nuclei, that is called as double fertilization, triple fusion. First hela syngamy, fertilization. Second hela triple fusion. Together it is called as double fertilization. Option C is the correct answer. Very good. Option C correct answer. समय से ठीक answer दोचो. Congratulations to all of you. Class में बुझिलो तामने. Next, if a diploid female plant and a tetraploid male plant are crossed, the ploidy of endosperm shall be dash. देखिए 44 आंसर किए दोची. 44 नंबर आंसर किए दबो. बहुत देखो, फीमेल प्लांट अच्छी डिप्लॉयड और मेल प्लांट अच्छी टेट्राप्लॉयड. तो डिप्लॉयड फीमेल प्लांट अच्छी माने आर जो दीटा पोलर न्यूक्लियस अच्छी n + n = 2n हे गला. और टेट्राप्लॉयड मेल अच्छी माने आर अबिका जो गैमेट टी बनिछि दैट इज 2n. तो 2n + 2n = 4n. आंसर कोन होबार? एटा करि पाइलो ना करि पाइलोनी? क्वेश्चन नंबर 44. Tetraploid. Yes, Monalisa. Good answer. A के लिखो तो yes. Option A is the correct answer. Very good, very good. Option B हबनी रे ओम प्रकाश. Option B is wrong answer. बेटा. Right answer is tetraploid. बुझी पाइलो ना कहि दोची दुआ. गोटे मिनिट. तमना पई क्वेश्चन टा हम कहि दोची. सी एडी कोन हेची जगह रे. ना एठी मेल जो अछि मेल होची टेट्राप्लॉइड. टेट्राप्लॉइड माने मेल लो एठी प्लॉइडी कहला कि 4n. तमे जानिचो 4n माने जब से गैमेट फॉर्मेशन करिवो गैमेट बनला बेले मियोसिस हे जिवो. एंड मियोसिस इज नथिंग बट रिडक्शनल सेल डिवीजन. और रिड्यूस हे गला माने 4n रो 2n हे गला. फीमेल जो अछि फीमेल कोन अछि ना फीमेल एठी अछि पिला माने डिप्लॉइड एज यूजुअल डिप्लॉइड अछि. तो डिप्लॉइड माने फीमेल एठी कोन अछि ना 2n अछि. तो 2n आफ्टर मियोसिस गला पर कोन हे गला n हे गला. तो आमे जानिछि कि जो ट्रिपल फ्यूजन हुए एंडोस्पर्म बने. एंडोस्पर्म रे कोन हुए ना दीटा पोलर न्यूक्लियई ता सहित किए मिसिबो ना वन मेल गैमेट. तो एठी जो मेल गैमेट अछि केमितिया ना मेल गैमेट अछि 2n और दीटा पोलर न्यूक्लियई कोन अछि n + n. तो n + n + 2n. आंसर केते हिजबो? आंसर हिजबो टेट्राप्लॉइड बा 4n हिजबो. I hope समस्त बुझी पाइल. Good, 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 good. Now, now the next question. এই কোশ্চেনটা আমি আরো পরে ক্লাসে পড়িবা. ଏବେ রিসেন্টলি পড়িবা তো সেই টাইমে সেই আনসারটা কইবি. তো টোটাল নম্বর অফ নিউক্লিয়াই ইনভলভড ইন ডাবল ফার্টিলাইজেশন এঞ্জিওস্পার্ম আর কেতেটা নিউক্লিয়াই ইনভলভ ହେଇଛନ୍ ডাবল ফার্টিলাইজেশন নে? কেতেটা নিউক্লিয়াস ইনভলভ ହେଇଛନ୍ ডাবল ফার্টিলাইজেশন রে?
आंसर कौन होगा डबल फर्टिलाइजेशन ହେଇଛି डबल फर्टिलाइजेशन ने मेल रो दीटा इन्वॉल्व ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ फीमेल रो 1 2 3 आंसर केते आसीबो आंसर इज 5 yes दिशा कुमारी राइट आंसर मोनालिसा राइट आंसर ऑप्शन डी ओम प्रकाश सौर्यजीत विजयलक्ष्मी everybody has given the right answer good now water of tender coconut water of tender coconut is dash endosperm cellular endosperm free nuclear endosperm very simple free nuclear endosperm then perisperm is a dash perisperm कौन होगा perisperm होज तमरा क्या आंसर दबा पेरिस्पर्म कौन remaining persistent new cellulose answer D 48 question answer कितना होगा yes Monalisa answer is D good Sarojit answer D Sushmita answer D right next which of the following is an example of the false fruit example किए ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନେ ସେ ପାର୍ଟଟା ଯାଇନେ fruit ପାର୍ଟଟା ପଢିବା apple napier strawberry cashew nut all of these case of false fruit ଏବେ true fruit all of these our right answer तो ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି जो fruit ସବୁ ଅଛି fruit କୋଉ develop କରିଥାଏ ovary ରୁ ବନିଥାଏ ଯଦି fruit ଟି outside ovary ବନିବା start କରିବ then it is called as false fruit which of the following floral part forms pericarp after fertilization pericarp के बनौची answer is ovary wall question number 50 Question number 50. Answer card of option C. Yes, Jagdish. Right answer. Next. Albuminous seeds store the reserve food main in dash. Albuminous seed the reserve food code rakhichi. Option B. Endosperm. Question number 51. The right answer is option B. Yes, good. Now, the coconut water from tender coconut is nothing but free nuclear endosperm. Saila? तापरे एठी आ किछ क्वेश्चन आसिला आ अल्प क्वेश्चन अछि सार देबा देन तापरे हम जिबा नेक्स्ट सेगमेंट को ए ब्रेक नै की देखिरा अल्प क्वेश्चन अछि persistent nucellus is called as dash and found in dash persistent nucellus is called as perisperm and it is found in the black pepper option number A बोल से देखो क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर इज ऑप्शन ए यस नुपुर राइट आंसर ओम प्रकाश अर्पिता मोनालिसा शक्ति समस्त राइट आंसर ठीक अछि Number 2, commonly in a mature fertilized ovule, N, 2N, 3N condition has respectively found in dash. N किए, 2N किए, 3N किए. देखो अभी क्या? Answer कौन होगा? Option D, yes, Jagdish, right answer. Option D. तीर्थ हबरी रे सुचिस्मिता शशि मोनालिसा शक्ति राजलक्ष्मी right answer is option number D that is egg nucellus and endosperm egg is haploid nucellus is diploid and endosperm is triploid the outermost layer of endosperm maize grain is called as maize ର outer layer endosperm ର outer layer एटा किए कहबो देखिबा आर आंसर होची option A ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟାର ଅପସନ ଏ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟାର ମନେ ରଖିବ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ର ଆଉଟର ଲେୟାର କୁ କଣ କହୁଛେ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟାର study the correct order of endosperm type correct order କଣ ଆସିବ ଆଗ free nuclear ତାପରେ cellular ତାପରେ halovial next last the question if an endosperm cell of an angiosperm contains 24 chromosomes the number of chromosomes in each cell of the root will be dash option C. C is the correct answer. Very good, very good. C is the correct answer. Samastha Kaipala. Thank you. Next question number 6. The type of tissue present in the fertilized ovule of an angiosperm plant to supply food and nourishment to the developing embryo is gas. Option C again. Answer is endosperm. Now, primary endosperm cell is formed after triple fusion. Option A. Yes. Shruti Satpathy, Ravensa High School, Secondary School. Right answer. Triple fusion is characteristic feature of what? Triple fusion code देखा जाए. Only in angiosperm. Option A. Question number 7 be A. Question number 8 be A. So thank you so much for your kind attention and we'll meet again. Let's take a quick 5-10 minutes here. ठीक 9:15 रे next class start करिबा. I hope तमाने phone join करिबो and 9:15 रे हमें phone एटा start करिबा. Done? Till now, let's have a quick break.